Okay, so hello everyone. So we'll start the discussion. Pesto method पूछा गया इसमें और there are two equations and you have to write a single program, general program. Okay, and the error tolerance should be 10 to the power -5. Uh, in the method which was given the slides, anyone has issue with the method, or should I explain it? Or can anyone explain it? Wants to volunteer based method? Sir, Sir, there is one doubt. Sir, Huh. is RSN value given or we have to take it? Okay. So R and S value is not given here. So you need to take it. So, sir, it is said in the question also print the value of R and S. So, first we take the initial values and then the calculated value, it should print R and S also. Huh. For Okay. every iteration, you need to print all these values. Okay. Okay. sir, Huh. do we have to make a general program or a program with respect to these two equations only? You need to make a general program. So you need to make one program. Okay. So that will be easier, right? You don't need to. Okay, so this will be specific, right? Specific for the equation. The program will be specific for the equation, right? So maybe you can make a program so that you find the solution for a 3-degree polynomial. Okay, and since both are 3-degree polynomials, you can just put in the take input as take the input of the coefficients. Okay, right? All right, all right. Okay. So you can do that thing. So how do we have to assume the initial value of R and S? Yeah, so take it as you can try it out, try different values, and so I think it will be fine if you take anything, but don't take very large values or very small values. Just be reasonable with the initial values. Like you can take R as 1, SS2. So be reasonable with it. Try out different values of RNS. See what you get as the error and what are the B values. Don't go too high or too low. So yeah, you can be reasonable and find out. So since it is not given, so that's the method you have to follow. Yeah. So will it be fine like if we manually solve first and then see the values of root and then we assume the values of R and S accordingly? So in that way, you want to use RNS as so that it is the root, or No, so so that in that case, it is close to the root and we are not deviating. yeah, that's fine. That's fine. Okay. But if you even if you don't solve it, you can just try it out, and you can just put it in a solver, in online solver, and you know what's the root. You don't need to solve it. And try it out. Try different values of RNS and see that the error is converging or not. Right. And since you will be printing all the errors, you know what is the progression of the error. So it will defeat the purpose of the procedure, right? If you are trying to find some kind of root before using the code. I mean, the purpose of the code is to find it in the first place. Yeah. So I believe that you should
I mean, ideally you should not look at the roots and just try different values of R and S and see that the error is decreasing or not, and therefore the roots are converging or not. But if you want to be cautious and you don't want to spend too much time, then it's the option that you can choose closer to the root. But ideally, what you should do is you should try different values of RNS, since it's not giving explicitly here. So before that, before any more questions, can anyone volunteer to elaborate on the Bayesto method? Just 2 or 3 minutes. So like we take a function which is given to us, and then we will write it in the form of that quotient and remainder form by taking out a quadratic term from it and a remainder term from it from the initial function, and then we'll find the roots of those functions first. I think. We find the roots of those functions. Roots of the deflated polynomial, is it? Yes. Okay, so Bayesto method, the purpose of this method is to find the roots of a polynomial. So what do you get from Newton-Raphson? Newton-Raphson gives you the root of any equation, right? But it does not give you all the roots. So it can give you one root, and it converges on one value, and it can give it can be helpful for a multivariate problem. But if you want to get all the roots of a particular equation, uh, Bayesto method is the way to go, and that's why you use this. And the process is similar to Newton-Raphson. We take initial value, we iterate upon it, and then we update the value such that the error is very negligible, till the error is very negligible and is less than the tolerance value. Then we say that it is converged. And what exactly are we converging? We are trying to converge the value of uh, RNS, so that we find the deflated polynomial, and thus the terms in the remainder become 0, and then we find a factor of that polynomial, and again we apply the Bayesto method on the deflated polynomial, and then we again find the factor out. So that's the way. And the important point of the Bayesto method is how do you find the derivative. If I can wait, I'll just share my screen. And okay, so this is fine. This is just algebraic rearrangements. After that, yeah, we know that these two should go 0 to become as so that the qx or qx become a factor of p and x, right? Just give me So, one sir, second. Just give me 1 second. sorry, desktop is shared, not that part. Yes, so now it is visible.
Yeah. Anyone had any issue? No. दिख रहा है ना अभी? Okay. हाँ. Yes. This is just algebraic rearrangement, and now we want to get this to 0. So we apply Taylor series expansion and neglect the higher order terms, and we get an expression similar to that we found in Newton-Raphson. The similar idea, not the similar expression. So that we get delta R and delta S. In Newton-Raphson, what we found is all the delta values of all variables, and we find the inverse of this. Okay, we find the inverse of this, and the Beresto methods give you exactly that. These delta values are given by C1, C2, C3, and this is the essence of Beresto method. And you need to find the inverse and find the delta R and delta S, and then you need to find the error values, and exact formula is given for error values. If error is less than the tolerance value, you say that it is converged. Otherwise you otherwise you update the value and reiterate until it is converged. Okay, and this is just the quadratic formula. So this is simple enough for you guys. Now we have got two equations, two third the cubic equations, and okay, cubic equations. If you just deflate it once, you will get a quadratic and one linear, and you don't need to deflate it multiple times to solve the equation. So that is also easier for you. Any other doubt in this tutorial? So जैसे हम लोग कम डाउट पूछेंगे because anyways हम लोग का वो है forex की फंडे वाला तो कितने बजे है? अभी चल रहा है वो. ओके, ठीक है, फिर आज 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं आज, तो वो बस कर देते हैं. इफ नो वन हैज डाउट, 1 or 2 minutes you can wait. Otherwise we'll make the announcement and leave you guys. Excuse me, sir. Sir, you said about the values of C1, C2, we can get it by differentiation. But in the notes, it is also given that Cn can be equals to Dn. Cn equals to Bn. So can we use this also, or only the partial differentiation? So you need to use that only. So Partial differentiation. You need to use the Cn values to find the values for the differentials, right? वहाँ पे formula दिया है, right? That is the Beresto method, that you find the values of the differential from the formula here, and then you need to just do the inverse. Okay. Okay, sir. हाय एवरीवन, तुम सब लोगों ने मोटर पर चेक करा? टर्म पेपर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है. किसी ने भी देखा क्या? Yes, ma'am. तो एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ जिसमें इंस्ट्रक्शंस मेंशन है. तुम लोग पूछ लेना, ठीक है? एक बार मैं ब्रीफ कर दूँ, फिर कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहले तो इसमें ये एक ग्रुप टर्म पेपर है, ठीक है? 4 टीम मेंबर्स होने चाहिए इसमें. एंड जो टॉपिक तुम जो भी सेलेक्ट करोगे टर्म पेपर के लिए, उसमें उसकी जो वर्किंग है, जैसे सपोज कुछ कोड वगैरह है या जो भी वो पेपर है, उसमें जो तुमने इस कोर्स में अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं या अभी कमिंग वीक में जो तुम पढ़ोगे, ठीक है, उसे तुम्हारे टर्म पेपर में वो सब इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है? ये मैंडेटरी है कि कोई भी हो भी सकता है, सिर्फ एक ही मेथड इंक्लूड हो सकता है, एक से ज़्यादा या 3-4 मेथड इंक्लूड हो, ठीक है? वो थोड़ा टॉपिक पे डिपेंड करेगा, बट
जो भी तुम्हारी ये कोर्स की जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका यूज होना चाहिए इसमें। एंड बाकी इसमें काफी अच्छे से मैम ने इस मतलब इस पीडीएफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या क्या इंक्लूड करना है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एंड इसमें डेरिवेशन का आई बिलीव कि तुम लोग खुद से इतना समझ सकते हो कि डेरिवेशन किस में किस कहाँ मेंशन करना जरूरी है कहाँ नहीं। बेटर होगा अगर डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है तो तुम उसे मेंशन कर दो। इवन इफ कुछ सिमिलर इक्वेशंस हो तो तुम सिमिलरली करके उसे शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है। जो भी तुम्हारा टर्म पेपर है उसकी जो तुम्हारी खुद की अप्रोच रही है वो सॉल्व करने में, ठीक है, वो यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम लोग अगर कुछ कोड कर रहे हो, ठीक है, एंड अभी भी तुम लोगों ने अपने असाइनमेंट्स में से ग्राफ वगैरह बनाए हैं रिपोर्ट में, तो हो सकता है कि तुम्हारा जो ग्राफ आ रहा हो, जो तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हो, वो एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा वैरी कर रहे हो, जो जो तुम टर्म पेपर रेफर कर रहे हो, ठीक है। बट जो तुम टर्म पेपर में शो करोगे ना, ये नहीं कि मेरा बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है तो चलो ठीक है अपना रहने देते हैं, ये वाला करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। रिजल्ट चाहे एक्यूरेट आ रहे हो या फिर इनएक्यूरेट, तुम्हें रिजल्ट हमेशा अपने दिखाना है इसमें, क्योंकि तुम टर्म पेपर के रेफरेंसेस मेंशन कर रहे होंगे एंड सपोज तुम्हारा कोड वर्किंग नहीं और तुमने रिजल्ट सही दिखा दिए, फिर तो इसमें वार्निंग लिखी है, तुम्हें पता है फिर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड बाकी इसमें इसमें ना ऐसे लेवल्स डिफाइंड है, ठीक है। तो तुम जो भी तुम अपना टर्म पेपर करो ना, अगर सपोज कोई कोड नहीं हो, सिर्फ तुम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे मार्क्स 0 to 50% तक वैरी करेंगे। एंड 15 मार्क्स की वेटेज है ना टर्म पेपर की, तो अकॉर्डिंगली मतलब देख लेना कि 15 मार्क्स काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। ग्रेड अच्छे से वैरी कर सकता है इन्हीं मार्क्स में, तो ये तुम लेवल्स के अकॉर्डिंगली देख सकते हो जो भी तुम टर्म पेपर सेलेक्ट करोगे। एंड बाकी तो इसमें फिर वही है, थोड़े मतलब रेफरेंस वगैरह मेंशन करनी है, कैसे मेंशन करनी है। सबमिशन में तुम्हारे जिप फाइल अपलोड करनी होगी, मतलब 4 टीम मेंबर्स है तो सिर्फ किसी एक को करनी होगी। एंड और कुछ तुम्हें डाउट है क्या? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि जो बाकी चीजें बहुत अंडरस्टूड है, खुद से तुम बहुत समझ सकते हो। एक चीज कंफर्म करनी थी, इसकी डेडलाइन क्या है? यार डेडलाइन, आई थिंक डेडलाइन तो अभी मैम ने नहीं बताया ना मोहित सर। Probably end of the semester types होगा। मतलब जब पीएमटी वगैरह आता है ना, मे भी हो सकता है अक्टूबर एंड के अराउंड, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक, मतलब अभी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। एक बार मैम से डिस्कस करके अगर मैम अभी इसके बाद भी अभी और इंस्ट्रक्शंस आएंगे, कुछ कुछ सैम्पल टर्म पेपर रिपोर्ट्स टर्म पेपर मैम अपलोड करेंगी जो तुम्हारे सीनियर्स के रहे हैं, ठीक है। मतलब जो तुम ऐसे रेफर कर सकते हो कि किस टाइप से तुम्हें टर्म पेपर बनाना है, ये तो मे बी शायद मैं मैम से एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर उसके साथ भी वो डेडलाइन भी बता दे तो। मैम एक डाउट है कि टर्म पेपर में जैसे कि सपोज न्यूटन रैप्सन में जैसे कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि बीटा टर्म डाल दिया डिनोमिनेटर में या ऐसे करके, तो इसको एक तरह की इम्प्रूवमेंट मान सकते हैं, मतलब ऐसे करके अगर हम कुछ करें वो हो गया, या फिर हमको एक नई टाइप की प्रॉब्लम खुद डिफाइन करके सॉल्व करना है, जैसे कि मे बी हम कोई नॉर्मल नोन मेथड न्यूटन रैप्सन ऐसे से हम कोई डेटा क्रंचिंग करें जो नॉर्मली नहीं की गई है, तो उसको भी आप कंसिडर करोगे क्या, या फिर आपको पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल मेथड में ही एडवांसमेंट चाहिए अदर देन द यूज ऑफ दैट मेथड? मे बी जो तुमने पेपर सेलेक्ट करा, ठीक है, उसमें हो सकता है वो एक मतलब कोई बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट तुम्हें पता है कि इस मेथड में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सो दैट रिजल्ट जो हो अपने थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस टाइप का तुम मतलब इसे थोड़ा फ्रेम कर सकते हो कि तुम उस पेपर के रेफरेंस में तुम उन्हें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे ओके। और मैम ये पेपर्स वगैरह कहाँ होते हैं जिससे मतलब हम कुछ सर्च करें और हमें मिल जाए कि हाँ ये सारे हैं, और हमें फिर पता लग जाए कि ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। हो। यार टर्म मतलब
इसके लिए तो काफी सारी साइट्स होती है, एक साइंस डायरेक्ट रहती है, एक नेचर रहती है, और भी रुको 1 मिनट में देखती हूँ। फिर आपको याद है क्या जर्नल्स के लिए और कोई साइट जो लोग रेफर कर फर्स्ट सकते क्लास में जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में, उसमें भी कुछ साइट्स थी। या जर्नल्स का जो वेबसाइट है उसमें कीवर्ड डाल के देख लेना एंड एग्जैक्टली और ये भी सोच सकते हो कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है एंड उस इंटरेस्ट के हिसाब से कीवर्ड डाल के चेक कर सकते हो कि इफ़ दैट पेपर इज़ यूजिंग सम न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर सही है तो अगर वैसा है तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इट्स नॉट कि तुम स्पेसिफिकली देखो कि न्यूटन रैफसन किसमें यूज़ किया है। यू कैन चूज़ एनी टाइप ऑफ पेपर बट हाँ, if they have used numerical methods, then you can use it in this course. तो फिर हम उन्हीं की डेटा को नंबर क्रंच करने में यूज करेंगे ना, और बेटर रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, मतलब So first thing you can do is you can reproduce that calculation part, right? Whatever they have done, whatever methods they have used, you can reproduce that calculation part. You sometimes ऐसा भी हो सकता है कि डेटा उसमें particularly provided ना हो, so you need to find data online. You need to find data from data banks anywhere. तो इसके लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, राइट? ट्राई मतलब इसको ट्राई करो कि हाउ कैन यू रिप्रोड्यूस दैट कैलकुलेशन, और मे बी if you understand what is the problem in the paper and you know that these are the equations to solve, तुम्हें लग रहा है कि इसमें जो मेथड है probably difficult है या फिर easier है, और you understand the equations, आपको अपने जो न्यूमेरिकल मेथड के कोर्स के नॉलेज के हिसाब से you can apply any of these methods which have been taught to you. So I think you should think in this kind of manner कि you have a problem, you have some equations, or you need to solve these equations. Okay. सर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वैसे तो सब होगा नहीं, पर अगर सपोज किसी ने एक पेपर है एंड जिसमें वो डेटा क्रंच कर रहे हैं, सपोज किसी वेदर इसका, इनको बेसिकली बाय ह्यूमिडिटी दे आर गोइंग टू टेल, एंड क्लाउड के वगैरह कुछ वेरिएबल्स होंगे ऐसे हैं, दे आर टेलिंग कि अगर इसका रूट निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि किस दिन बारिश हो सकती है, ऐसा करके कोई डेटा है। तो उसमें अगर इन लोगों ने न्यूटन रैप्सन लगाया है सिंपल वाला, और अगर मैं इसमें न्यूटन रैप्सन विद इंप्रूवमेंट बीटा लगा दूं, तो ऐसे में हम मुझे मतलब फुल मार्क्स दे देंगे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि अदरवाइज तो कोई भी ऐसा डेटा होगा वो लोग खुद ही अपने हिसाब से बेस्ट ही फॉर्मूला यूज करेंगे। पर अगर किसी ने इंफीरियर फॉर्मूला यूज किया और मैं बस सुपीरियर डालूं तो काफी होगा। तो यार रिसर्च इस ऐसे ही होता है, मतलब जो जहाँ पे गैप्स होते हैं वहाँ तुम आइडेंटिफाई करो। तो एक्चुअली पेपर्स में लिखा भी होता है कि कहाँ पे रिसर्च गैप्स बचे भी हैं इसमें कंक्लूजन, तो यू नीड टू रीड दैट पेपर। तो तुम्हें प्रॉब्ली तुम समझ जाओगे कि कहाँ गैप्स हैं। तो इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि गैप्स हो सकते हैं पेपर में, एंड उसके बाद तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? ओके, थैंक यू, काफी अच्छी चीज। मोस्टली पेपर में तुम्हें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाता है एंड में, तुम उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है। एंड थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ी अच्छी रिसर्च करना, ठीक है, सब टॉपिक चूज करने से पहले, क्योंकि फिर जब तुम एक बार वर्क स्टार्ट कर दोगे तो तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हें बीच में फिर से टॉपिक चेंज करना पड़े। काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस दोबारा से पढ़ लेना, एंड नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट। और वन मोर थिंग, this Sunday some of the people will have their vivas, okay?
Sunday, what is the date exactly? Third, I guess. Third. 3rd October. Third. So I will share the list on Saturday. I'll share the list on Saturday, and it will be on. Uh, it will be on only one assignment, and it can be anyone. So those who have not तो इसकी had डेडलाइन क्या है? term paper, हाँ टर्म पेपर का मोस्टली एंड ऑफ द सेमेस्टर जैसा होगा, एंड यू विल हैव 1.5 months और एटलीस्ट 1 month तो होगा ही। ओके 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 सर थैंक तो मेजर से पहले ये सब हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब प्रोबेबली नवंबर का, ये सेम कैलेंडर याद नहीं आ रहा, बट पीएमटी वगैरह के अराउंड ये सारी डेडलाइंस रहती है सर, पीएमटी से पहले। तो तुम मान सकते हो कि अक्टूबर लास्ट वीक तुम एक डेट लेकर चल सकते हो, एक्सटेंड हो सकती है। आई डाउट कि इससे कम टाइम मिलेगा। मैम तो इसके ऊपर वाइवा भी पूछेंगे क्या टर्म पेपर पे? नहीं, सिर्फ सबमिशन होगा। सर आप असाइनमेंट के बारे में कुछ कह रहे थे सर। कौन सा असाइनमेंट? ओके, अच्छा, वाइवा के लिए हाँ सर। असाइनमेंट किसी एक असाइनमेंट पे होगा। इट कैन बी एनीवन, मोस्ट प्रोबेबली 3 and 4। तो 3 and 4 प्रिपेयर कर लेना, एंड आई विल शेयर दैट लिस्ट 15 or 20 पीपल में भी, जिनका अभी तक हुआ नहीं है उनमें से संडे को होगा। सो जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप कि Saturday I will share the list, and Sunday we'll have the Viva. So actually we are trying to complete one Viva for everyone before we go on to the second Viva. So in that case, जिनका भी बचा है I will share. I think 15, 20 or 30 people का भी बचा है इस ग्रुप से, so half of that we'll have on Sunday. Also, sir, assignment, the grades को release होंगे. I will try कि हो जाए as soon as possible, but I think एक राउंड सबका वाइवा कंप्लीट हो जाए, देन एट दैट टाइम विल रिलीज द मार्क्स अब जितने भी असाइनमेंट्स हुए हैं तब तक के लिए, राइट? 1 or 2, give us 1 or 2 weeks more and we'll give out the marks. Okay, sir. So deadline will be same, Tuesday night. Nothing is different in that manner. Any more thing you want to say, or so I will wait till 5:40 if anyone has anything to say, otherwise we'll close the session. Thank you.
I think we can end the session if no one has